Hello friends, myself Deepak Gupta, again signing in on this platform of CollegeDekho.com, and today we will be picking up a topic from the subject cost accounting, and the name of the topic is overhead distribution. So as you all know, the what is overhead cost. So we will first understand, and we should just revise what is overhead cost and how overhead costing is to be performed. So I told you earlier that overhead cost is actually the indirect cost, all indirect costs associated in a business. We should say that when a business entity is creating the product, so some of the expenditures are incurred directly with the product and they can be directly related with the product, which we use the word direct cost or commonly known as the prime cost. But there are various other expenditures, for example, the rent, the depreciation, the staff who is making security at the gate, all those kind of expenditures, whether they are tangible in the form of material, human beings cost that is labor or other kind of expenditures, they are no doubt incurred for the product, but they are not related directly. They are not related directly with the product, but though they have been incurred for the product, such are known as indirect material, indirect labor, and indirect expenses. And these indirect costs are commonly known as the overheads. Now, such overheads can always be incurred in the production area. So, we use the word production overheads or factory overheads. And if such overheads are incurred and in the administration or office section of the business, then we use our administrative or office overheads. And if they are incurred for the sales and distribution of the product, then they are known as selling and distribution overheads. इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कि आपने अपने सेल्स बॉय को कमीशन दिया, तो जो सेल्स बॉय का कमीशन है, हाँ, अब ये कमीशन इट कैन ऑलवेज बी ओवरहेड्स. जो ऑफिस का स्टाफ है, अगर ऑफिस के स्टाफ का सैलरी है, ऑफिस का रेंट है, तो चाहे ऑफिस का सैलरी हो, चाहे ऑफिस का रेंट हो, दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ ऑफिस ओवरहेड्स. और मैंने अभी एग्जांपल दिया कि रेंट ऑफ द फैक्ट्री या सिक्योरिटी के चार्जेस, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी. सो अगर डेप्रिसिएशन फैक्ट्री की प्रोडक्टिव मशीनरी का है तो वो प्रोडक्शन ओवरहेड्स है. अगर वो ऑफिस के एसी का है तो वो ऑफिस ओवरहेड्स है. और अगर एसी फैक्ट्री में लगा हुआ है तो उसी एयर कंडीशनर को हम फैक्ट्री ओवरहेड बोलेंगे. उस एयर कंडीशनर की कॉस्ट को, उसके चार्जेस को, उसके डेप्रिसिएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड. तो इट इज़ रिलेटेबल बाय द प्लेस. तो अगर वो एसी लगा हुआ है स्टोर रूम में जहाँ रॉ मटेरियल रखा हुआ है या जहाँ प्रोडक्शन हो रही है तो वो फैक्ट्री ओवरहेड है. अगर वो ऑफिस में लगा हुआ है जहाँ टॉप मैनेजमेंट बैठी हुई है तो वो ऑफिस ओवरहेड है. और अगर वही एसी सेल्स के डिपार्टमेंट में लगा हुआ है तो वो सेलिंग ओवरहेड है. तो जो भी उस मशीनरी का, एयर कंडीशनर का डेप्रिसिएशन होगा वो ओवरहेड्स होगा. ये डिस्कशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं जब हम लोगों ने बेसिक चैप्टर्स डिस्कस किए थे, या जब हमारे प्लेटफॉर्म से दोबारा जुड़ेंगे then we will discuss it again and we can always be helping with your problems. So जो भी आपके issues होंगे वो उस सेशन के साथ वहाँ solve कर दिए जाएंगे. Now, in this generalized session, my prime focus is regarding the factory overheads costing. That is, when we use the word cost, so because direct material, direct labor, and direct expenses are directly relatable to the product, there is no problem in their accounting. That is, how they will be added to the cost of the product is no worries because they are directly related to the product. But when we talk of the factory overheads, तो ये तो सबको पता है कि भाई ये कॉस्ट है, बट किस बेसिस पर इन्हें प्रोडक्ट में ऐड किया जाए, तो किस बेसिस पर आपने इनको प्रोडक्ट में ऐड करना है, दैट इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस अंडर दिस सेक्शन ओवरहेड कॉस्ट. So we will study various techniques, that is how factory overheads are added to the product and what you call it overhead cost. So we have to understand that this overhead costing is a concept of pre-costing. That is, pre-costing was defined earlier as the cost accounting which has been incurred before the period.
इट मीन्स बिफोर द प्रोडक्शन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, आप उससे पहले ही कॉस्टिंग कर रहे हो, तो ये सारी की सारी एस्टिमेटेड बेसिस पर होती है। तो कॉमन सेंस ये कहता है कि आप आने वाले प्रोडक्शन पीरियड के सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स को एस्टिमेट करिए। तो वी एस्टिमेट वेरियस ओवरहेड्स एंड देन वी आल्सो एस्टिमेट द आउटपुट। अब वो आउटपुट अगर प्रोडक्ट के बेसिस पर लेके चलें तो आप एस्टिमेटेड बेसिस पर आउटपुट भी जज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि इन द मंथ ऑफ से अप्रैल 2022 the company plans to make 10,000 units. Now second will be what kind of overheads will be incurred in the factory. तो जो फैक्ट्री के मैनेजर हैं, फैक्ट्री के कॉस्ट अकाउंटेंट्स हैं, वो फैक्ट्री के सारे खर्चे, जितने भी खर्चे फैक्ट्री के होते हैं, चाहे वो फैक्ट्री का रेंट हो, चाहे वो फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी हो, डेप्रिसिएशन हो, एज डिस्कस इन द कॉस्ट शीट चैप्टर, जितने भी फैक्ट्री से जुड़े हुए ओवरहेड्स हैं, उन्हें अंदाज़ा लगाएंगे, उन्हें एस्टिमेट करेंगे। So before we move further, you will notice that the first part of every overhead costing, the first part of every overhead costing is the estimation of overheads. तो यहाँ दो तरह के एस्टिमेशन है। एक तो पहचानना, तो हम लोग एक वर्ड और यूज करते हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड एस्टिमेशन। वाई दीज टू सेपरेट वर्ड्स? बिकॉज आप पहले पहचानोगे कि भी कौन कौन सी कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड है। ऐसा ना हो कि कोई प्राइम कॉस्ट हो, उसे आप फैक्ट्री ओवरहेड में काउंट कर ले, या कोई ऑफिस ओवरहेड है, उसे आप फैक्ट्री ओवरहेड में काउंट कर ले। तो यू विल यूज द कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द एलिजिबल फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड देन यू विल एस्टिमेट देयर amount. So identification and estimation of overheads become the first step. Now, फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, अगर यहाँ हमने कहा कि हमारे फैक्ट्री के एस्टिमेटेड ओवरहेड्स 1 2 3 करके ये अराउंड 20 ओवरहेड्स हैं और उनकी अमाउंट हमने एस्टिमेट करी, द फिगर इज से 2 लाख रुपीज़। तो व्हाट वी कैन से दैट यू आर इनकरिंग 2 लाख रुपीज़ फॉर 10,000 यूनिट्स, दैट कम्स आउट टू बी ₹20 per unit. So this is a overhead rate. That is, we presume that this is the overhead cost per unit. So when you calculate the prime cost, you add these factory overheads based on this rate. तो अगर कंपनी की जो प्राइम कॉस्ट है प्रोडक्ट की वो 70 रुपीज़ है और ये 20 रुपीज़ हमारा ओवरहेड रेट है, तो प्राइम कॉस्ट तो एक्चुअल बेसिस पर आ गई, बिकॉज देयर वोंट बी मच वेरिएशंस। और ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं ये आपने एक प्री डिटरमाइंड रेट की बेसिस पर ऐड कर दी। तो वी यूज अ स्पेशल वर्ड that when factory overheads are added to the prime cost, what I'm saying, when factory overheads are added to the prime cost on the basis of a predetermined overhead rate, we use the word absorption. We use the word absorption. So we say that a unit of product with prime cost 17 has absorbed rupees 20, has absorbed rupees 20 as the factory overheads, so the factory cost comes out to be rupees 90. So we use a special word for overheads, that is when the cost is added we calculate the prime cost, and when in this prime cost we add factory overheads or any other overhead on a predetermined basis, then in addition to this word we use the word overhead absorbed. So absorption of overheads is the addition of overheads on a predetermined basis. So our basic objective in this overhead distribution is how this overhead rate. So now the word has become the overhead absorption rate. So what we have to study, how this overhead absorption rate is calculated. How this overhead absorption rate is calculated. So we have to calculate the overhead absorption rate. Now, before I move further, when we have this factory,
So we can always estimate the overheads of the total factory. Or it can happen that there are various separate segments, which we use the word departments. So there can be different departments in the factory which are performing various separate functions. We can say department 1, 2, 3, 4, 5, 6. There can be as much number of departments in a factory as per the nature of the product. तो अगर कोई बुटीक चला रहा है तो एक डिपार्टमेंट होगा जहाँ पर रॉ मटेरियल की कटिंग हो रही है, एक डिपार्टमेंट होगा जहाँ उसकी स्टिचिंग हो रही है, एक डिपार्टमेंट होगा जहाँ उसकी फिनिशिंग होगी, एक वो डिपार्टमेंट होगा जहाँ उसकी पैकिंग होगी. तो वी कैन हैव 4 डिपार्टमेंट्स: कटिंग, स्टिचिंग, फिनिशिंग एंड पैकिंग. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आप जब फैक्ट्री के ओवरहेड्स एस्टिमेट करेंगे तो सारे फैक्ट्री के ओवरहेड्स कंबाइंड कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पर जब आपने ये ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन रेट निकाला तो दिस कैन बी एस्टिमेटेड ओवरहेड्स ऑफ द ओवरऑल फैक्ट्री टेकन टुगेदर. और अनदर more appropriate way is that each product, or I should say each department, will have different output because हर की आउटपुट अलग अलग है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 100 पीस कटिंग करी तो एक पर्टिकुलर पीरियड में जरूरी नहीं है कि सारे के सारे स्टिच हों. तो अगर आपने कटिंग तो कर ली 200 पीसेस और उसमें से स्टिचिंग हुई है सिर्फ 140 पीसेस, तो दोनों डिपार्टमेंट्स की आउटपुट अलग अलग है. तो अगर आप कंबाइंड ओवरहेड्स काउंट करोगे तो डिपार्टमेंटल इनएफिशिएंसी कवर नहीं कर पाएंगे. सो व्हाट पीपल डू, दे एस्टिमेट द ओवरहेड्स डिपार्टमेंट वाइज एंड दे कैलकुलेट द ओवरहेड रेट नॉट of the whole factory together but for each department separately. So these overhead, that is what I'm writing again, that, and I'm making it with red, that these overheads absorption rates, these overhead absorption rates can either be same for whole factory, and we use the word blanket rate, blanket overhead absorption rate. So blanket rate in itself specifies that it is a overhead distribution rate for the whole factory's overheads taken together. Another is that we calculate a different or specialized absorption rate, different rate for each department. तो हम हर डिपार्टमेंट का सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट करते हैं एंड हेयर वी यूज द वर्ड डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट. सो डिपार्टमेंट ओवरहेड रेट आर प्रेफर्ड because they are more specific. They are more specific to calculate cost. So because we have to study the departmental rate, तो we are focusing, अगर मैंने आज लिखा कि अगर हमारा फोकस डिपार्टमेंटल ओवरहेड रेट निकालना है तो हमें उस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स एस्टिमेट और आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे. तो वी हैव टू आइडेंटिफाई that which kind of overhead relates to which department and how much is the amount to be incurred. So for each department specifically, for each department, and non-specific overheads, that is some overheads can be which are non-department specific but they have been incurred for the factory as a whole. For example, the security guards. The security guards are employed to cover the whole factory to provide protection to the each and every department. So whatever are the expenditures paid for the security are a kind of factory overheads and they are generalized. They are not any department specific. So what we have to understand here, if I come again, that because we have to calculate the departmental overheads, we have to classify and relate that which overheads is department specific and which overhead is universal to all departments. So what we do in cost accounting, that to calculate an effective departmental overhead rate,
we transfer the department specific overhead to that department's cost sheet. और इफ आई स्पीक इट अगेन, कि हम हर डिपार्टमेंट की ओवरहेड डिपार्टमेंटल रेट निकालने के लिए, हर डिपार्टमेंट की स्पेसिफिक ओवरहेड कॉस्ट निकालने के लिए, जो ओवरहेड उस डिपार्टमेंट स्पेसिफिक के हैं, तो उस डिपार्टमेंट की एक सेपरेट ओवरहेड कॉस्ट शीट बन जाती है. तो वी यूज द वर्ड एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स. तो एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स का मतलब क्या है, कि डिपार्टमेंट स्पेसिफिक ओवरहेड्स को उस डिपार्टमेंट की कॉस्ट शीट में ऐड करना. और जो ऐसे ओवरहेड्स हैं जो डिपार्टमेंट स्पेसिफिक नहीं है, ओवरऑल फैक्ट्री के हैं, उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में प्रोपोर्शनेट करना, बांटना, डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज. तो अगर मैंने बोला एग्जांपल दिया सिक्योरिटी गार्ड्स का, तो अगर सिक्योरिटी गार्ड्स पूरी फैक्ट्री के प्रेमिसेस की बाउंड्री को कवर कर रहे हैं, तो जितना जिस डिपार्टमेंट का एरिया है उसके अकॉर्डिंग आप उस ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. या हर डिपार्टमेंट के ऊपर गार्ड खड़े हुए हैं, तो जिस डिपार्टमेंट पे जितने गार्ड खड़े हुए हैं उसकी बेसिस पर सिक्योरिटी के चार्जेस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. तो यहाँ दो बातें नोटिस होंगी. पहली चीज, आपको कॉमन ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. दूसरी चीज, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको कोई ना कोई बेसिस चाहिए. So when we distribute common overheads, generalized factory overheads to specific departments as per the usage, we use the word apportionment. What the word is? Apportionment. Or we can also use the word appropriation. Appropriation of overheads. So by this apportionment or appropriation of overheads, which is done on a particular basis, so we use the word basis of appropriation, the basis of apportionment. So we identify the most to the point, most specific basis, and on that basis we apportion common overheads to each department. Now, another point to remember is that when we have these departments, some of these departments, so I'm again writing it in say green color, that some of these departments are directly involved in the production. So we use the word production departments. And some of these departments are not actively involved in the creation of the output, but they provide services to such production department. We use the word service department. So for example, अगर किसी फैक्ट्री में कोई कैंटीन है, तो कैंटीन उस फैक्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, बट वो आउटपुट नहीं दे रहा, वो बाकी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा है. तो सर्विस डिपार्टमेंट provides the services to the production department, and the production department gives the output. So because there is no output of the service department, so when we are doing allocation and apportionment, by these three steps, this service department will always have a share of the overheads. But because there is no output, we cannot calculate its overhead absorption rate. So therefore, we will have to transfer the service department overheads to the production department. So basically we use the word reapportionment. That is why I'm writing it in a special color. We use the word reapportionment of service department overheads to production departments. And that is done on the basis of how much services are used by each production department of such department. So by these four steps, we now have the total overheads which were specific to a particular department and which were generalized for the whole factory. They were transferred now to each department, only the production departments, on the basis of how much they relate to it. So now, if we compare it with the blanket overhead, then there is no such specialization. That is why blanket rate does not provide an effective cost accounting system, and therefore we should follow departmental overhead rate. So we should always identify overheads department wise.
Then those which are department specific overheads, we should do allocation. For the common overheads, we should do apportionment, and then we should transfer the service department overheads to the production departments, and therefore all total factory overheads will now rest with the production departments only. Now, once we are done this with, we will arrive at the stage which we started with, that now we will have what we will have estimated departmental overheads, and we will divide it by the estimated departmental output, which will give us departmental overhead absorption rate. Now this output can be measured not just with the units produced. There are other ways also. For example, how much is the direct labor hours which have been produced by the department. So we can use various output criterions. We can use various output criterions. So it is not like that we will calculate the overhead rate per unit. So अगर ये output आपने units में count करी है, then we will have rate per unit. अगर hours में count करी है, then we will have per hour. So similarly, we can have various output criterion, and based on that we can calculate different absorption rates, and that what constitutes our fifth step. And I'm writing it in red because this is one of the most important question of the paper, that is calculation of absorption rates, which is based on different output criterion, and these output criterion have been used as in the past. So we use the word traditional criterions, and now with the period of time we have developed new more specific output criterion where we use the word ABC, that is activity based costing. So we can calculate overheads in traditional methods and as per the activity based methods. The prime difference is these traditional methods are primarily five output criterion which are used for all kind of industries, whereas the ABC, the activity based criterion, is industry specific. Each industry can identify its output criterion on its own. So how that will be done, that will be discussed in the coming sessions and also in detail when you join us on our platform collegedekho.com. Now, once we are done with this, we come back to our normal criterion, that is the sixth part. Now, to make you understand that, I am going with the earlier example कि अगर डिपार्टमेंटल ओवरहेड्स जो एस्टिमेटेड बेसिस पे थे वो लेस से 1,20,000 थे, और हम अगर यूनिटरी मेथड फॉलो कर रहे हैं तो जो डिपार्टमेंटल आउटपुट है वो लेस से 10,000 यूनिट्स है, तो इट कम्स आउट टू बी ₹12 पर यूनिट. नाउ प्राइम कॉस्ट में 12 रुपये ऐड करके आप टोटल कॉस्ट निकाल लोगे. दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द एस्टिमेशन. तो आपने क्या करा, पीरियड स्टार्ट होने से पहले अंदाज़ा लगा लिया 1,20,000, उसे डिवाइड किया एस्टिमेटेड आउटपुट 10,000 से, 12 रुपये क्या निकाल लिया रेट, और जैसे प्रोडक्ट बना 12 रुपये जोड़ दिए, प्रोडक्ट बना 12 रुपये जोड़ दिए. बट एक्चुअल आउटपुट, जो एक्चुअल आउटपुट है आपकी, दैट मे नॉट बी इक्वल टू द 10,000 यूनिट्स. तो फॉर एग्जाम्पल इफ द एक्चुअल आउटपुट इज ओनली 9,000 यूनिट्स, and similarly the actual overheads may not be 1,20,000. So say actual overheads incurred are 1,15,000 rupees. So what is happening, that a company has incurred actual overheads as 1,15,000, whereas the budgeted were 1,20,000. Similarly the budgeted output was 10,000,
but the actual output is only 9,000 units, which is quite possible. But what is happening here, that because you had a rate of rupees 12, so in each of 9,000 units, you have added 12 as the overhead cost. So in cost accounting, only a 1,08,000 is the amount of overheads which have been charged to the cost. That is, these are the overheads absorbed to the costs. So what is happening here, that these are the overheads absorbed and they are debited in the cost accounts, and these are the overheads which are actually incurred and they are debited to the financial accounts. So we will study in detail the topic reconciliation or non-integrated accounts, where we will address this issue that if the overheads in cost accounting are different than the overheads in the financial accounting, then there is a difference in the profits reported. And how that is to be coped with, we will discuss when we will study the topic reconciliation of cost and financial accounts. But coming here, what is happening, that you have absorbed, so basically overheads which have been absorbed are 1,08,000 based on the actual output of 9,000 units and predetermined rate, and the overheads which have been actually incurred are 1,15,000. So what is happening here, that there is over और अंडर, व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ एब्जॉर्ब्ड कम है, तो अगर एब्जॉर्ब्ड वाली फिगर कम है, यानी कि अगर ओवरहेड्स एब्जॉर्ब्ड कम है और एक्चुअल ज़्यादा है, देन वी यूज द वर्ड अंडर एब्जॉर्प्शन. क्या वर्ड यूज़ किया हमने, अंडर एब्जॉर्प्शन. तो यहाँ अंडर एब्जॉर्प्शन है 7,000 रुपये का. और अगर ये वाइस वर्सा होता कि एब्जॉर्ब्ड होते ज़्यादा और एक्चुअल होते कम, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ 1,15,000 नहीं 1,05,000 रुपये खर्च हुए, तो ये तो मैंने 1,08,000 लिया था, यहाँ पर भी मैं इसको 1,08,000 ले रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैंने एक्चुअल माने थे 1,15, तो 7,000 का अंडर एब्जॉर्प्शन था. लेकिन अगर ये 1,05,000 मान लूँ, तो यहाँ एब्जॉर्ब ज़्यादा हो गए, सो वी यूज द वर्ड ओवर एब्जॉर्प्शन. वो कितने रुपीज़ का हुआ, 3,000 रुपीज़ का. ये एक तरीके से डिफरेंस है कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, एंड वी हैव टू टेक केयर फॉर इट. सो वी हैव टू आल्सो स्टडी द लास्ट पार्ट, दैट इज हाउ these over absorptions and under absorptions are to be dealt with. So we have to study the treatment of over absorption and under absorption. Treatment of over absorption, but they will always be practical. So I hope I'm able to make you understand. So summary is that you do overhead distribution through a overhead distribution summary sheet, and how that is to be prepared, that we will discuss in our next session, that is how to create an over distribution summary sheet based on a numerical example. And after the distribution summary sheet, we have the department specific overheads which are divided by the specific output criterion to arrive at the figure of the overhead distribution rate, sorry, overhead absorption rate. So I hope this session was useful for you. I hope to see you again. This is Deepak Gupta signing off.